हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन and welcome to my channel SS Physics Point. So myself Sudham Samantre and I was teaching you physics. Then what we have discussed in the previous lecture, that the chapter current electricity. What we have studied? We have studied about drift velocity, about the variation of resistance and Ohm's law, and finally we studied about the color coding of resistor. Today we are going to study about the combination of resistance. This is very important for the point of view of your examination or for the point of view of any competitive exam. Definitely you are going to get 1 mark question, or maybe they may ask for 3, or maybe ask for as a long question from this combination. In every entrance examination, definitely you are going to get one question. Definitely there will be one question from this combination of resistances. So this is very important topic. So I want to say that those who have not subscribed the channel, subscribe it so that I can bring more videos, and also you can find my videos easily on your YouTube. So let's start today's topic, that is combination of resistance. So I just want to give you a few recap, very quick recap. That is resistance, you know, that is the opposition to the flow of current is said to be what? Resistance. And the opposition are offered by the positive charges inside the conductor, and the element which opposes the flow of current is said to be a resistor. So here we will study the combination of resistances. In 10th class also you have studied there are two types of combination, that is one is series combination, another one is parallel combination. So what is series combination? You know the symbol of resistance. This is the symbol of a resistor, and one more symbol is there. Sometimes you will find that this is the symbol of a variable resistor. This is also known to be rheostat. Rheostat. What we will study about this resistor. So let's start. How when you will say that the resistances are in series combination? Remember, when the resistances are connected end to end, एक के बाद एक रेजिस्टर लगा हो एक सर्किट में, then that is said to be series combination. Like that, suppose this is one resistor and this is another resistor. So if they are connected end to end, this is first resistor, this is second resistor, they are connected end to end, then that type of connection is said to be series combination. So here I am saying the resistances are said to be in series combination if they are connected end to end, one after another. Here there are three resistors, they are connected one after another. This is said to be what? Series combination, as they are connected end to. Next, what is the special, what is the rule? What is the rule to find out the resistance in series combination? Remember, the rule is that the current for all the resistor is same. Current is same for all the resistor. Remember, in series combination, equal amount of current flows across each resistor. That is, if the current flowing through the circuit is I, then through the circuit R1 current is also I. For this also, for this also, everywhere the current will be same. Then what is the difference? The difference is that the potential drop across each resistor will be different. Remember, in series combination, the current across each resistor is same, while the potential drop across each resistor is different. So
what the amount of potential you are applying, that is divided across each resistor. This potential is divided across each resistor. For the first resistor, suppose the potential drop is V1. For the second resistor, suppose the potential drop is V2, and for the third resistor it is V3. This V1, V2 are different, but the current across each resistor is same. This is the rule for series combination. So write properly what is series combination and write that the current is same for all the resistor in series combination, while the potential difference is different for all the resistor. Don't write in symbol, just write in language that the current through each resistor is same, while the potential drop across each resistor is different. Next one is there, suppose after writing that, write that let us consider three resistors. Let us consider three resistors having resistances R1, R2, R3. They are connected in series with a potential or battery of V volt. Just write it properly. Let us consider three resistors of resistances R1, R2, R3 are connected in series with a potential or battery of V volt. Then after you know that according to Ohm's law, the potential drop across the first resistor, पहला रेजिस्टर में जो पहला वाला है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इक्वल्स टू यू नो I into R according to Ohm's law. So V1 will be I1 R1. So write it in a systematic way so that it will look like a 3-mark question. So V1 is I into R1. The potential drop across the first resistor is V1 equals to I into R1. For the second, similarly V2 will be how much, I into R2, and V3 will be how much, I into R3. After writing that, the net potential should be equal to the summation of all the potential. So therefore I am writing the net potential is equal to or is given by V equals to V1 plus V2 plus V3. So replace V1 by I into R1. So I into R1. Similarly V2 I into R2. V3 I into R3. So how much it will be? Just take common of I को निकाल लो. तो I, और here also I am missing I. So here RS, what is RS? Right here RS. RS is the equivalent resistance in series combination. सबको मिलाने से कितना आ रहा है? Suppose RS. This is the equivalent resistance. Equivalent resistance मतलब सबको मिला लो कितना आ रहा है? Suppose that is RS. So here write RS is the equivalent resistance of series combination. RS is the equivalent resistance of series combination. So here I and here I, they will cancel out. So RS will be R1 plus R2 plus R3. So in series, this is the expression for equivalent resistance in series combination. So in series combination, the equivalent resistance will be how much? R equals to how much? R1 plus R2 plus R3. जितना भी resistance है सबको जोड़ दो और सबको मिला लो. Just take the summation of all the resistance. That will give you the net or the equivalent resistance. Next one we are going to study or will discuss some points. So after this, just make a note. Just make a note and write all the points. So make a note, write in the first point, if there are n number of resistors, if there are how much n number of resistors, make a note and write in the first point, if there are n number of resistors. 3 था तो कितना हो गया? R equals to R1 plus R2 plus R3. मान लो n number of resistors है तो कितना होगा? RS will be how much? R1 plus
R2 डॉट डॉट कितना हो जाएगा Rn. Then if there are n number of resistors, then the equivalent resistance is how much? Rs equals to R1 plus R2 डॉट डॉट कितना हो जाएगा Rn. सपोज सबका रेजिस्टेंस मान लो सेम है. If suppose writing the second point, if R1 equals to R2 equals to suppose R, सबका रेजिस्टेंस मान लो कितना है R है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सबको मिला लो, इधर जोड़ लो, so ये कितना हो जाएगा Rs. Then the equivalent resistance will be Rs will be how much? R plus R plus R plus R, how much? N number of resistor. So ये कितना हो जाएगा R plus R plus up to कितना हो जाएगा N नंबर. तो ये कितना हो जाएगा Rs will be how much? N times of R. Remember this one. This is going to help to find out the resistances very easily if the resistances of all the resistor are same. मान लो दो रेजिस्टर है R और एक R और एक है R, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा R 3R. तीन रेजिस्टर है तो तीन जस्ट मल्टीप्लाई विथ 3, देन 3 into R. ऐसे आसानी से आप निकाल सकते हो किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का. मान लो सबका रेजिस्टेंस क्या है सेम है. तो next one, write one more point here. One more point. The equivalent resistance is what? The equivalent resistance is greater than the individual resistance. Remember, पहले कितना था R था, तो सबको मिलाने से कितना आया 3R. So equivalent resistance is greater than the individual resistance. In which combination? In series combination. ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी. मान लो एक रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस को आप लोग लगा रहे हो सर्किट में, कैसे लगा रहे हो वो नहीं बताएगा, लेकिन बताया है कि आप रेजिस्टर को सर्किट में लगा रहे हो. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड द मिनिमम वैल्यू. तो जब मैक्सिमम निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीरीज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. रिमेंबर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस और द रेजिस्टेंस हैव मैक्सिमम वैल्यू. तो राइट हियर, just write here what you have to write, that the resistance, the equivalent resistance is greater than the individual resistance. Just make a note, write properly according to the instruction so that you will have a very nice note. So the equivalent resistance is greater than the इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ये हो गया इसके बारे में सीरीज कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो नेक्स्ट दे में भी आस्क फॉर 3 मार्क. ये कितने मार्क? 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. देयर कैन बी आस्क फॉर 3 मार्क क्वेश्चन. देन नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है, व्हेन वी विल टेल द रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. कब बोलोगे रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? व्हेन if one end of all the resistor are connected to a common terminal of the battery. जैसे मान लो ये बहुत सारे रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर. ये सबका रेजिस्टर जो है उनका एक कॉमन पॉइंट है, सब वन एंड, इसका एंड और इसका एंड और इसका एंड, और ये दोनों का सबका एक एंड. मान लो ये किसके साथ? एक बैटरी के साथ लगा हुआ है. If they are connected, one end of all the resistors are connected to a common point. सब रेजिस्टर का एक ही एंड एक कॉमन पॉइंट में लगा हुआ है, किसका? एक बैटरी का. Then that is said to be which combination? Parallel combination. Because in resistor you can't distinguish which is positive terminal and which is negative terminal. The end which is connected to the positive terminal, that it can be treated as the positive end. So here write in parallel combination that the resistances are said to be in parallel combination if
one end, remember, one end of all the resistor are connected to one end, one terminal of a battery, and other end to another terminal of the बैटरी. ये हो गया क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलोगी कि रेजिस्टर्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल if one end of all the resistors are connected to a common point and other end to another common point, then that is said to be parallel combination. So after that, what is the rule in parallel combination? Similarly, whatever you have written in series combination, you can write here also. So what is the rule in parallel combination? Remember here the potential across V across each resistor is same. Remember, potential drop across each resistor is same. In parallel combination, remember the potential drop across each resistor is same, while the current across each resistor is different. Remember, this is the rule, that in parallel combination the potential across each resistor is same, but in series combination what was same? Current. Remember, don't confuse with that. In series combination current remains same, potential is different, but in parallel combination potential is same, across each resistor is same, while the current is different across different resistors. So after that, just draw the circuit. Let us consider, write down, let us consider three resistors. Write yourself. Let us consider three resistors of resistances R1, R2, R3 are connected in parallel combination with a battery of V volt. Let us consider three resistors of resistance R1, R2, R3 are connected to a battery of V volt. Then here I am just doing the parallel combination. There are three resistors. So there are three resistors. They are connected in parallel with a potential of V volt. Suppose they are connected with a potential or battery of V volt. This is R1, this is R2, this is R3. Suppose current I flows through the circuit. So here is also V, here is also V, here is also V. This potential drop across each resistor will be same. Remember, that is the rule for parallel combination, that the potential drop across each resistor should be same. Then what is different? Different is current. Suppose here current is suppose I1. Suppose here current is I2. Here suppose I3. Remember, the current across each resistor will be different. In which combination? In parallel combination. So right, you know that the net current, as the current is different, the current applied should be equals to the sum of all the current. Because current is different, there what is potential is different. So you are writing net potential equals to V1 plus V2 plus V3. Here what is different? That is current is different. So net current will be the sum of all the current. So net current through the circuit is given by how much? I equals to I1 plus I2 plus I3. So you know, according to Ohm's law, I equals to how much? V by
are parallel. I am saying this Rp, this is the equivalent resistance, that is the net resistance of all the resistor. Rp is what? The net resistance of all the resistor. ये सबको मिला लो, मिलाने से कितना आ रहा है? सपोज कितना आ रहा है? इतना Rp. So that is the equivalent, that gives net potential by net resistance will give you the net current. Net resistance by net potential by net resistance will give you what? Net current. Therefore V by Rp equals to how much? This is I1 will be how much? V potential is same across each resistor, so V1 by R1 plus V by R2 plus V by R3. I am not writing V1 by R1 because the potential across each resistor is what? Same. So just take common of V. So V by Rp will be how much? V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So VB will get cancelled out. So finally 1 by Rp will be how much? Remember 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is very important lesson. Remember the net resistance in parallel combination will be how much? 1 by R parallel equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This was the equivalent resistance of parallel combination. They may be asked of 3 mark. 3 मार्क क्वेश्चन के लिए वो पूछ सकते हैं किसमें? एग्जाम में, आज बोर्ड एग्जाम में भी आता है. नेक्स्ट वन इज, so just make a note and write there whatever you have written in which series combination, same thing you can write in parallel combination. So write here, if there are n number of resistors, then the equivalent resistance will be how much? 1 by R1 plus 1 by R2 dot how much? 1 by Rn. If there are how much? N number of resistors. Then one more point, remember if all the resistance of all the resistor is same, मान लो सबका रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, तो कितना होगा? 1 by Rp will be how much? 1 by R plus 1 by R nth टर्म, तो ये कितना हो जाएगा? 1 by Rp will be how much? N by R. N number of resistor, so N by R. So Rp will be how much? Rp will be R by N. Remember, Rp will be R by N. तो इधर क्या हो रहा है? देखो थोड़ा अच्छे से देखो. Rp will be how much? R by N. तो रेजिस्टेंस इधर क्या हो रहा है? घट रहा है, मतलब कम हो रहा है. और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था. मान लो 3 रजिस्टर, वही 3 रजिस्टर में ले रहा हूं, सबका रेजिस्टेंस मान लो R है, तो इक्विवेलेंट R पर सीरीज कितना था? 3R था. मान लो 3 रजिस्टर का पैरेलल कर रहे हो, तीनों को पैरेलल लगा रहे हो, तो कितना होगा? रेजिस्टेंस R है, तो ये कितना हो जाएगा? R by 3. Remember, this is decreasing. The individual resistance is greater than this one. R is greater than R by 3. तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो रहा है किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन. Then after that just make another note that the resistance or equivalent resistance of all the resistor is smaller than the individual resistance. The equivalent resistance is smaller than the individual resistance. Then just one more point, third node, make a third node and just do this. Is I am doing it as a problematic, but you can remember it. But this is going to help you to solve many questions in an easy way. Suppose there are 2 resistors, they are connected in parallel combination across a potential of V volt. Suppose this resistor have resistance R1, this is I2. I am not giving the potential, just they are connected in parallel. If I is the current flowing across this, then find I1 and I2. Just do it. Pause the screen, try to do it yourself.
कैलकुलेट I1 and I2, कैलकुलेट I1 and I2। बहुत अच्छा सवाल है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, देखो, पॉज द स्क्रीन, ट्राई टू डू योरसेल्फ। जिसका हो गया इधर देखो, जिसका नहीं भी हुआ इधर देखो। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसका, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज आर इक्विवेलेंट कितना होगा। इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दो रेजिस्टर जब है, उसी फॉर्मूला को सबको याद रखना है, 1/R1 by 1/R2। ऑल शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो 1/Rp, आई एम जस्ट राइटिंग, जस्ट डू सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये कितना आ जाएगा, Rp विल बी हाउ मच, R1 R2 by R1 plus R2। उसका एलसीएम ले लो, उसके बाद ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो फाइनली 1/Rp दिस मच आ जाएगा। तो Rp कितना होगा, R1 R2 by R1 plus R2। ये फॉर्मूला सबको याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सब याद रखना है। रखने से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आपको एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद उस पर रेसिप्रोकल करना है, ये ज्यादा प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सो इजीली कैसे याद रखना है कि आपको R1 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। देन जस्ट कैलकुलेट द करंट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द करंट। तो करंट कैसे निकाले, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट रिमेंबर द रूल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें भी इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। The potential drop across R2 should be equals to the potential drop R1. So just remember that rule so that you can find the current. But in which combination? In parallel combination, net current equals to I1 plus I2. Net current equals to I1 plus I2. लेकिन उसमें दिक्कत है कि potential drop across this resistor should be equals to the potential drop across this resistor. So just do that one. I1 R1 potential drop across first resistor should be equals to the potential drop across the second resistor। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, I1 by I2 निकालो, कितना हो जाएगा, R2 by R1। तो you can do it in 2 or 3 ways। just find the value of I1, ये I2 इधर आ जाएगा, then put here, you will get the value of I1। Then what I am doing in the same way, you know that in 10th class ratio summation we have studied, that is equals to R2 by R1 plus R2। just do the summation, I1 divided by I1 plus I2 should be equals to R2 divided by R1 plus R2। तो ये कितना हो जाएगा, this is equals to I1 equals to, ये इधर आ जाएगा, so R2 into I1 plus I2 divided by R1 plus R2। so I1 plus I2 किसके बराबर है, R के। तो कितना हो जाएगा ये, I1 equals to IR2 divided by R1 plus R2। ये फॉर्मूला सब याद रख लेना। The current through first resistor equals to net current into R2 divided by R1 plus R2। उसके बाद find the value of I2। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, I R1 divided by R1 plus R2। ऐसे भी आप लिख सकते हो। R2 कितना हो जाएगा, I2 will be I into R1 divided by R1 plus R2। ये I2 और ये I1 हो गया। इसको याद रखने से क्या होगा कि आप क्वेश्चन जब भी दो रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, इससे आप आसानी से करंट निकाल सकते हो दो रजिस्टर में। ये हो गया। नेक्स्ट वन, जस्ट डू ए क्वेश्चन, आई विल गिव ए क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। जस्ट क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द potential drop across each resistor, drop across each resistor। और एक रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, each रजिस्टर निकालो। क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है ऐसे,
मान लो ये 3 और ये 6 हो गया, दिस इज 3 ओम, दिस इज 6 ओम, सपोज दिस इज 72 वोल्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज V1 एंड V2। V1 और V2 निकालो। जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ, खुद करने की कोशिश करो। खुद नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे मैं कर दूंगा, आप ऐसे उतार दोगे तो कुछ उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। जब तक खुद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इफ यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ, यू विल नॉट गेट द concept solution. You just look at the solution. The very first thing is that first find the current I, then the I will be same for both the resistor. You know the current for all the resistor is same. Then you can find the potential drop. That is V1 will be how much? I into R1. So just write it. R equivalent, find R equivalent. Equivalent resistance कितना होगा ये सर्किट का? देख लो, 3 plus 6 is how much? 9. 3 plus 6 is how much? 9 ohm. Then I will be how much? V by R according to which law? This is Ohm's law. V equals to IR. So I will be V by R. So ये कितना हो जाएगा? V कितना दिया गया है? 72 by 9. That is how much? 8 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है? 8 एम्पियर। कितना करंट? 8 एम्पियर करंट जा रहा है। तो करंट नहीं मिल गया, उसके बाद तो V1 निकालो और आसान हो गया। V इक्वल्स टू हाउ मच? I into R1। तो I कितना है? 8 into R3 कितना हो गया? 24 वोल्ट। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा? I into R2, ये कितना हो जाएगा? 8 into how much? 6, that is how much? 48 वोल्ट। ये हो गया कितना? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस स्विच। बहुत आसान सवाल था, आप करना चाहते तो कर सकते हो। जो बच्चे नहीं कर रहे हो तो खुद करने की कोशिश करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ऐसे। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द करंट एंड द पोटेंशियल ड्रॉप। कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। करंट भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है। करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। सर्किट कैसा दिया गया है? मान लो ये एक रजिस्टर है और एक इसको और एक रजिस्टर दिया गया है, उसको कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ। ये मान लो 12, ये मान लो 6 ओम, ये मान लो सपोज 6 ओम, ये मान लो सपोज 60 वोल्ट। तो फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसमें भी कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना पोटेंशियल, इसमें कितना पोटेंशियल, इसमें कितना पोटेंशियल। फाइंड द पोटेंशियल। जस्ट पॉज द स्क्रीन, स्क्रीन को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। देन लुक एट द सॉल्यूशन। सो हाउ विल डू? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट जस्ट रिड्यूस द सर्किट। सो हाउ इट विल लुक दैट? ये दो मिलकर एक रेजिस्टर बन जाएगा। ये दोनों कैसे लगा हुआ है? पैरेलल। दे आर कनेक्टिंग। हाउ दे आर कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों कैसे दिख रहा है? देखो, इसका भी एक एंड इधर है और इसका भी एक एंड उधर लगा हुआ है। ये रेजिस्टर का एक एंड इधर है, ये रेजिस्टर का और एक एंड उधर है, तो कॉमन एंड मिला हुआ है। तो दे आर कनेक्टेड इन व्हिच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा? आर पैरेलल कितना हो जाएगा? याद करो फॉर्मूला को, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन कितना हो जाएगा? 72 by 18, ये हो जाएगा कितना? 4 ओम। ये दोनों को मिलाने से कितना हो गया? 4 ओम। ये कितना दिया गया है? 6 ओम, ये हो गया 4 ओम। अभी देखो, अभी आसान लग रहा है ना? देखो, ये भी दिया गया है कितना? 60 वोल्ट। ये दोनों कैसे लगा हुआ है? देख लो इधर, दोनों कैसे लगा हुआ है? सीरीज में। अभी सीरीज में दोनों, तो दोनों को मिला लो तो फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 plus 4 कितना हो गया? 10 ओम। तो करंट निकालो सर्किट में। करंट कितना जा रहा है? तो करंट कितना होगा? सपोज करंट आई कितना होगा? I equals to V by R equivalent।
तो कितना हो गया, V कितना दिया गया है 60 डिवाइडेड बाय 10 विल बी हाउ मच 6 एम्पियर। कितना करंट ये सर्किट में, पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर। रिमेंबर कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर। कैसे किया हमने, पहले दोनों का इक्विवेलेंट निकला। फर्स्ट वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू, देन दिस टू, दिस इज इन सीरीज विद दिस रेजिस्टर, सो नेट हो गया 10 ओम, then the current will be how much, V by R, उससे निकला कितना 6 एम्पियर। After getting current, remember this, look at this circuit, current कितना जा रहा है 6 एम्पियर। तो this 6 एम्पियर is flowing across this resistor, this 6 एम्पियर is flowing across also this resistor, because these two are in which combination, they are in which combination, series combination। तो the potential drop across this resistor 6 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V इक्वल्स टू हाउ मच, I इंटू R। तो I कितना जा रहा है 6 इंटू रेजिस्टेंस कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 36 वोल्ट। तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 36 वोल्ट। तो इसमें कितना हो रहा है, तो इसमें कितना होगा, इधर हो गया कितना, ये रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया कितना 36 वोल्ट। तो इसमें कितना होगा, करंट कितना जा रहा है 6 एम्पियर, इधर भी करंट जा रहा है 6 एम्पियर। तो कितना होगा ये 6 इंटू 4, दैट इज हाउ मच 24 वोल्ट। तो ये रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 24 वोल्ट। तो इसमें भी 24 होगा, इसमें भी 24 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं पैरेलल। These two resistors are in which combination, parallel combination, the potential drop across this should be equals to this, so therefore this is 24 volt, the potential drop is 24 volt, the potential drop is 24 volt। तो करंट कैसे निकालना है, करंट आसान हो गया, करंट इसमें कितना जाएगा, करंट इज हाउ मच हियर, जस्ट लुक एट हियर, करंट इज हाउ मच, करंट कितना इधर जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 24, तो करंट इक्वल्स टू हाउ मच, I इक्वल्स टू V by R। तो V कितना है 24 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 12, तो कितना हो गया 2 एम्पियर, ये हो गया I1। तो I2 कितना होगा, सिमिलरली 6 by 12, ये कितना हो जाएगा 6 by 12, इधर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 24 और करंट कितना है, सॉरी पोटेंशियल हो गया 24, रेजिस्टेंस कितना है इधर इस रेजिस्टर में 6, सो दिस इज हाउ मच 4 एम्पियर। तो हो गया, देखो 4 2 मिला लो 6 हो रहा है 6। तो ये 6 एम्पियर इधर से जाके इधर जा रहा है, इधर कितना जा रहा है 6 एम्पियर। This 6 ampere is current is flowing here and again it is divided here. Here suppose I2, here I1। तो I1 कितना आया देखो 2 ampere, तो इसमें कितना करंट जा रहा है 2 ampere। The current flowing through this 6 ohm resistor is how much 4 ampere। दोनों को मिला लो 6 आ रहा है। अगर आपका रिजल्ट सही है कि गलत है ऐसे पता चल सकता है, कैसे you can check your result। 2 plus 4 is how much 6 ampere, the net current through the circuit is 6 ampere, then our answer is correct। So to solve this type of question, just find the current through the circuit। After getting current, what we did the potential drop across this resistor। तो उसमें भी जितना potential drop होगा इधर ही इतना potential drop होगा, तो ये दोनों को मिलाने से भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल, हाउ मच वी फाउंड, इट वाज 4 ओम। तो 4 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 4 into 6, that is 24 volt। The 24 volt is same across this 24 volt, also across this potential drop is 24 volt। तो 24 इधर भी 24, तो कितना हो जाएगा 24 24 24 24 V, then current is V by R, so V by R 24 by 12 to here 24 by 6 is 4 ampere। इसको भी और एक तरीके से कर सकते हो, कैसे, मान लो I कितना जा रहा है, I करंट इज फ्लोइंग, I इज हाउ मच 6 एम्पियर, इधर से 6 एम्पियर करंट जा रहा है, देन इट इज डिवाइडिंग। तो जस्ट यूज द फार्मूला, I1 was how much, I into R, that is 6 into
I1 निकालना है तो 6 into 6 divided by 12 plus 6 is how much? 18. तो कितना हो जाएगा? 3. This is how much? 2 ampere. Also this way also you can do by using the formula which we have derived earlier. पहले हम लोग जो फॉर्मूला निकाले थे उसी हिसाब से भी आप कर सकते हो. और इसमें कितना करंट जाएगा? I into that is 6 into R1 that is 12 divided by 12 plus 6 that is 18. तो ये कितना हो जाएगा? 3. ये हो जाएगा 4 एम्पियर. आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे आप तरीके बहुत सारे हैं. आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो. ऐसे भी करने से भी आंसर वही आएगा. और एक तरीका है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. तो जस्ट वन क्वेश्चन, राइट वन क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट डू एज योर होमवर्क एंड सेंड इट टू मी. सपोज I current going through here, I'm just giving I equals to suppose 27 एम्पियर मान लो. इधर 1 2 3 रजिस्टर है, they are connected in parallel. Suppose 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Calculate current through each resistor. I1, I2, I3. I1, I2, I3 का वैल्यू क्या है? जस्ट फाइंड इट आउट. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आप अपने हिसाब से करो. I will give you a trick also so that you can find the answer also. In this question, you can solve it also easy way. If you are understanding the concept, there is many way you can solve in this chapter. That is the combination of resistances. So just find the value of I1, I2, I3. 1, 2, 3 ohm, 27 ampere is current flowing through the circuit. So this was all about the combination of resistance. We have studied series combination and parallel combination. In the next class, we are going to solve how to find equivalent resistance of few complicated circuit. I'll give you the trick in the next lecture. So thanks for watching. And one more thing, those who have not subscribed, just subscribe the channel so that it motivates or it gives courage to bring more videos for you people. Thanks for watching.